So what is trypsin? Trypsin is a kind of protease. It will act on the remaining proteins. How much percent of proteins were degraded, completely degraded, or completely broken down and absorbed, completely degraded in stomach? 20%. 20%, right? And here It's 20% only. Yeah, here 80% degradation, breaking down takes place. Okay, and absorption also takes place here. Okay, so trypsin it acts on the remaining proteins. Okay, so it is first secreted as what? It is secreted as trypsinogen, like pepsinogen. Pepsin was also secreted as an inactive enzyme, right? Inactive molecule. And then in the presence of certain thing, there was the presence of HCl, right? In the presence of acid, it was getting activated. Here it gets activated in the presence of enterokinase. Okay, this is another enzyme basically, and it is also known as enteropeptidases. Okay, so in its presence, this trypsinogen, okay, converts into trypsin. Here you can see. Miss, Right? is kinase is some? Yes. Or some kind of a big molecule? present in the Kinases are also a kind of, proteins. Okay, kinases is again a category. Okay, so category of enzymes which break down, basically they transfer phosphate group. Kinase means different enzymes which are involved in transfer of phosphate groups from, like ATP, ADP to ATP formation jab hota hai. Okay, I have taught you in advanced class about ATP, right? Triphosphate. So ADP is diphosphate. Okay, so the enzymes which are involved in this, transfer of phosphate groups from high energy phosphate donating molecules to specific substrate. Okay, so that class of enzyme is known as kinase. Okay, so that is kinases. Is it clear? Is it clear, Pawan? Yes, Miss. Yes, miss. Yes. Okay, so here, so this is what happens in trypsin. Okay, you can see this equation also. Trypsinogen converts into trypsin in presence of enterokinase. So remaining proteins पे क्या work करता है in intestine? Trypsin. Clear? What is specific doubt, or it is clear? Yes, Miss. It's clear. Clear? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So intestinal juices we have covered. Now we'll start with the large intestine. Okay. So we have seen that small intestine में बहुत, especially the last part of the small intestine is highly, folded. Okay, and where maximum absorption takes place. Okay, then what comes? Then comes the large intestine. So the large intestine is about how much? 1.5 meters. Okay, and this also has 3 parts: cecum, colon, and rectum. Okay, so cecum is what? It's a blind pouch. It's a very small blind pouch. Okay, situated at the junction. ठीक है, जहां पे large small intestine large intestine से meet करता है. So there we find cecum. ठीक है, so from its blind end projects a narrow, worm shaped tube which is known as vermiform appendix. This is what? Anyone heard about appendix? Yes, miss. It's a functionless miss. organ. Yes, functionless. Yes, sometimes it's cut down during operations. It gets Yeah. infected.
Yeah. So vermiform appendix is a kind of That is under condition of appendicitis, like that yeah. operation. A particular if there's some problem, then we do this. Okay, not naturally, not normally we do. Okay. Vermiform, you know, vermiform का meaning क्या होता है? Vermiform, the term itself means worm shaped. इसलिए हम इसको vermiform appendix बोलते हैं. It shows its structure. Okay. So yeah. So when if it gets inflammation or something, then we call it appendicitis. Appendicitis means itis. I told you itis means inflammation of that part, right? So appendicitis में हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं. ठीक है. So functionless organs को हम एक term से बोलते हैं vestigial organs. या पढ़ोगे different vestigial organs. That means the organs which were functional before but now they are non-functional. Okay, functional before means So in are our there any ancestral more line. functionless organs in our body? There are many. Okay, there are many vestigial, vestigial structures, vestigial organs in our body. There are many. Okay. So Can you just name a few except this vermiform appendix? Vermiform appendix is there. Then there's a coccyx. Coccyx portion is there. जिसको हम tailbone बोलते हैं. ठीक है. Last vertebral column bone. Yeah, that is tailbone. जहाँ पे पहले tail हुआ करता था. Now that portion is the end part. End part of your vertebral column. Then there are tonsils also can be under the appendix. Under the vestigial organs. Okay. So in your class 12th, I think, yeah, 12th, you will study different vestigial organs of humans. Okay, there are many. What was the function of tonsils? Huh? What was the function of tonsils? Tonsils, basically, if you see tonsil, what do you know about them? Tonsil, first of all, tell me. Miss, all I just know is they are something related to the neck region. Okay. Basically, here when we talk about tonsils, they function as a defense mechanism. Okay. जो टॉन्सिल वाला पोर्शन होता है वहां पे एक आपकी लिम्फ नोड होती है. ठीक है. तो वहां पे बहुत सारी चीजें लाइक इट एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है. मतलब उस पोर्शन में टॉन्सिल अपने आप में क्या होता है, टॉन्सिल में जैसे अगर कुछ वैसे तो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, मतलब पैथोजेंस एंड ऑल, पैथोजेंस नहीं, मतलब जो भी माइक्रोब्स हैं, दे विल गेट क्लियर्ड बाय द हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है. बट समटाइम्स टॉन्सिल में इन्फेक्शन होती है, राइट? सो तब तो टॉन्सिलाइटिस हम उसको बोलते हैं. ठीक है. सो दैट इज सम काइंड ऑफ bacterial infection to tonsils. So basically it's the in this also there is an inflammation. What? So in tonsils infection also there is an inflammation. Yeah. This Because, kind of redness. Tonsillitis. Miss, but defense mechanism is even required now, so why is it a vestigial organ? Yeah, but initially it was, the tonsil, when I'm telling tonsil as a, vestigial organ. Okay. So what does it mean? That means, like tonsils, bit like the appendix, they only, it is very big in previously, a very leftover part is there. Okay. So I'm just getting little आप उसके अंदर मत जाओ. टॉन्सिल जो होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू मेनी ऑर्गेनिजम्स आल्सो. ठीक है. आई एम टेलिंग अबाउट द नॉट जस्ट ह्यूमंस का. ठीक है.
tonsil is the vestigial organ. बेसिकली आपका जो पहले स्ट्रक्चर्स हुआ करता था, टॉन्सिल वाज वेरी what we say developed. Now it is not so developed. It is very reduced. Okay, No significant use. no significant use. But here also it is like little bit in protection, but previously it was a proper organ. Okay. Yes, miss. So yes, so now then apart from, like, next to the cecum is what? Colon. What is colon? Colon is the next part which is broader than the cecum. Okay, and it is much broader than the ileum also. It is a little more than a meter long. आपने structure देखा होगा सबने, right? So in that structure you can see, and it passes up the abdomen on the right, crosses to the left just below the stomach, and down on the left side. वो जो आपके पास बुक में शायद वो structure नहीं बनाया है, आप you can see from net. Wait, I'll show you. I think, but you all would have seen intestine ka structure, right? So here you can see, right? So the same line of which I was telling you, that is colon is broader. ठीक है, यहाँ पे आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के बाद ये शुरू होता है. ठीक है, ये जो आपका इलियम था, इलियम के बाद here appendix, and then it will start. ठीक है, and it passes up the abdomen on the right, then it crosses towards the left. Okay, so हमारे बॉडी में जब हम लेफ्ट राइट करते हैं तो ऑपोजिट होता है, राइट? So इसलिए स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है. So here then it passes to the left, okay, and just below the stomach, and then down on the left side descending colon. ठीक है, and then ending to the rectum. Rectum end part है, तो ये जो पूरा है this is colon. ठीक है, so cecum बहुत छोटा सा portion होता है which is appendix, and then whole thing is mainly colon. Okay, and then last portion is your rectum, which is the last part, and this is just 15 centimeters. ठीक है, and this is approximately 1 meter. ठीक है, the colon part is 1 meter. Okay, and then this is rectum. Rectum में भी मैंने आपको बताया था sphincter muscles, right? Sphincter muscles. So the anus has circular, muscles, which are again sphincter type of muscles. Okay, to keep it closed except when passing, bowels. Okay, so that is rectum. Is it clear? Structure? Yes, miss. Okay. So what is the function of the large intestine? So very, very important that it secretes no enzyme. No enzyme. Okay. It absorbs much water. ठीक है, that's why हमारा यूरिन में water content high होता है. ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जब किडनी से पास होता है, ठीक है, वाटर वहां फिल्टर होता है, लेकिन एंड देन जो खाना होता है यहाँ पे धीरे 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 most of the water gets absorbed in the large intestine. Okay, so here basically what happens, your water gets absorbed, ठीक है, and the feces, they become semi-solid, okay, which passes into the rectum and are expelled at intervals. The expulsion of the undigested remains is known as defecation. Okay, so here also when the water is required by the body too much,
when basically water intake is low, then what happens? Then you find, your urination also decreases, or maybe, it will become highly pigment, yellowish, very low, very less in amount. Even the, feces, they become also hard, okay, more hard, and that creates many type of diseases, okay. So the feces are normally composed of what? It should have 75% of water and 25% of solid material. Okay, so this is must. If this percent of water decreases too much or increases too much, both are certain diseased conditions. Okay. So then 30% is what? Is your, among that, 30% is dead bacteria, 10 to 20% fat, 2 to 3% proteins, and 30% of roughage. This is in the solid part. Okay, solid part जो 25% है, if we consider it as 100%, then 30% and 30%, 34% is roughage. Roughage is very very important part. जैसे आप जो ये खाते हो, dietary fibers, जो भी कंटेंट होता है जिसमें डाइटरी फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, आजकल बहुत सारे हाई फाइबर बिस्किट्स, हाई फाइबर, मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द एडवर्टीजमेंट एंड इन द मार्केट. सो फाइबर कंटेंट जब ज्यादा होता है, सो बेसिकली दैट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन, बिकॉज वो क्या करता है, बोवल को बहुत सही करता है, तो रफेज शुड बी 30%, रफेज कंटेंट शुड बी देयर. Then dead bacteria, whatever dead remains are there in the bowels. Okay, and that's why this is another thing that mostly dead bacteria, but it can be, sometimes may not be so very dead. Some pathogens, some spores or something can be there which are being released in the, feces. Okay, so that's why sanitary cleanliness and proper disposal is also important. Okay, then fats and proteins are there. The bad odor of feces, that is basically due to bacterial action in it. Okay, so here we discuss the part of the digestive system, right? Now let's see the assimilation of food. What is assimilation? Assimilation is the conversion of absorbed digested food into body material. Okay, that means now till here we discussed where which part is being broken down. Okay, and now we'll see that how they are getting absorbed, okay, and converted into the respective, respective molecules which are required by the body. Okay, so the food digested and absorbed by the gut are transported in two ways. Okay, so what are the two ways? First is through hepatic portal system. Okay, yeah, this we have discussed once, hepatic portal system. Here, no, it's in class 10th. Have you heard about hepatic portal system? Yes, miss, just heard the name term. Okay. Yes, actually, last class you explained. You, So what did I yes, explain? Anyone remembers? So hepatic portal It's like you just gave the structural part, like the diagram which was given in a book. You told that it was wrong, and it is also a duct comes from a common bile duct comes from liver, and that joins that includes the duct from that gallbladder and the liver both, and it also and the duct from pancreas also open to form the hepatic portal. Okay. Hepatic portal, pancreatic duct, yes, miss. Hepatopancreatic duct. Okay. ठीक है.
सो बेसिकली ये जो अब्जॉर्प्शन होता है ये दो तरीके से हो रहा है, राइट? हियर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम एंड lymphatic system. Okay, so basically आपको ये डिटेल्स में यहाँ समझाया नहीं गया है, like what is hepatic portal system. Hepatopancreatic duct is different, ठीक है? hepatic पोर्टल सिस्टम जो है वो हम उसको एक सिस्टम क्यों बोलते हैं? बेसिकली जो आपका हेपाटिक पोर्टल सिस्टम होता है, इफ यू सी, मतलब ये आपको क्लास 12th 11th में पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? सो द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, इसको वेनस सिस्टम बोलते हैं. वेनस सिस्टम मतलब यूजुअली क्या होता है, किसी भी ऑर्गन में मोस्टली आप देखोगे कि एक तरफ से आर्टरी आ रही है, फिर कैपिलरीज है, और उसके बाद वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कैपिलरीज का, मतलब दे आर एक्सचेंजिंग द गैसेस, एक्सचेंजिंग द मटेरियल्स, whatever is going to go in and going out, and then it will convert into vein and go out of that organ or the part, right? हमारी पूरी बॉडी में मतलब मोस्टली हर जगह जो हमारा मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इसी तरह से बनाया गया है कि वन artery is coming, it is dividing into capillaries in a particular portion and then going out as a vein, correct? But here when we talk about hepatic portal system, it is a venous system, ठीक है? So it returns the blood from the digestive tract and spleen to the liver, ठीक है? Hepatic portal system basically it returns the blood from the digestive tract and the liver, मतलब digestive tract and spleen and put it into the liver, ठीक है? सो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें वेन्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज, ठीक है? ये सारे जो पोर्शंस हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज, यहाँ से क्या होता है, इन सारे ऑर्गन्स में पहले आर्टरी आती है, कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है, फिर वेन बनती है, एंड ऑल दोज वेन्स दे कम इनटू द लिवर, ठीक है? and then again it goes out as a vein. So this is the only kind of system. हम hepatic portal vein भी पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे vein only enters and vein only comes out also. Okay. So its main function is basically what? Its main function is to deliver deoxygenated blood to the liver to be detoxified, ठीक है? Before it returns to the heart. तो हर जगह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वेन आ रही है, राइट? आई टोल्ड यू वेन इज कमिंग, सो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट कम्स टू द लिवर, ओके, एंड देयर इट गेट्स डिटॉक्सिफाइड. उसमें क्या है, कुछ ऐसा पोर्शन है विच शुड नॉट गो बैक टू द हार्ट. सो ऑल दोस डिटॉक्सिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू द हार्ट, ठीक है? क्लियर है? Is it clear, बच्चों? Hepatic portal system. Yes, miss. Okay. Yes, So that miss. is, and then second is your lymphatic system. Lymphatic system, I think you all will be knowing. What is lymphatic system? Anyone? Anyone? No idea? Miss, lymphatic system is the system through which the lymph flows in the lymph vessel. It forms the defense mechanism of the body, and it contains a kind of white blood cells known as lymphocytes, Okay. ठीक है, white blood cells तो आपने which act पढ़ा as हुआ है, right? You all have heard about white blood cells and lymphocytes, right? सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है white blood cells, RBC, WBC? Yes, miss. सबने पढ़ा है, Yes, right? miss. Yes, miss. हाँ. सो हमारी बॉडी में एक तो मैंने वो सिस्टम बताया आपको, दूसरा एक सिस्टम होता है, दिस इज अनदर सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारी बॉडी में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. एक तो होता है ब्लड,
ठीक है, जिससे हम वेन्स, कैपिलरीज, जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सो हमारी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है वैसे हमारी बॉडी में लिम्फ से सर्कुलेट करता है। लिम्फ इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, सो वो पूरा सिस्टम भी हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। ठीक है, एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन विच पवन टोल्ड, दैट इट हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि हमारी बॉडी की जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल्स, पी सेल्स, मतलब हम पढ़ेंगे आगे, तो वो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन फाइटिंग मतलब से डील करते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो फिल्टर होकर लिम्फ में आते हैं, और वो लिम्फ एक नोड के पास पहुंचता है जहाँ पे वो सारे पैथोजेंस फिल्टर होते हैं, और वहां पे उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अवर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, विच टेक्स केयर बाय लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर? Yes, miss. सो आई जस्ट शो यू वन डायग्राम, क्योंकि आपको लिम्फेटिक सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। ये हम पढ़ाएंगे आपको, इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में पढ़ना भी नहीं है, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, सो सी दिस इज योर लिम्फेटिक सिस्टम इन द बॉडी। ओके, and these things which are shown in big, they are the nodes, kind of important parts of the lymphatic system. Okay, see, this is your bone marrow, this is your kind of, ये सब आप पढ़ेंगे आगे, pairs, patches, spleen, ठीक है, thymus, spleen, thymus, they are very important parts. ठीक है, even appendix. ठीक है, here it's not important, इसमें सबसे ज्यादा important आपको spleen और thymus पढ़ना होगा हायर क्लासेस में, and bone marrow. ठीक है, so many things are there, even tonsil is comes under lymphatic system, that's why I told you it helps in defense mechanism, protection. ठीक है, okay, so coming back to the NCERT, sorry, into your book. Now these two systems are there where the food which is digested and absorbed, okay, are transported by these two systems. So simple sugars, amino acids, vitamins, minerals, etc., they are carried to the liver, okay, by hepatic portal vein. ठीक है, जो vein liver जाती है, that is hepatic portal vein. ठीक है, the liver converts any excess glucose, important. ठीक है, the liver converts any excess glucose into the glycogen. ठीक है, important function of liver is it converts glucose to glycogen. excess glucose मतलब यहाँ पे बहुत सारे हमने वो पढ़ा था, right? Different no, did we do the endocrine system? No. Okay, so there are some hormones, okay, which will be responsible for sugar, utilization of sugar. So those things you will study in details in liver later. So normally you can understand whatever glucose we take, carbohydrates we take, right? जो भी आप खाना खा रहे हो, sugar या जो भी, starch. So what happens to that? It gets, obviously, ये जो path हम पढ़ रहे हैं उसके through, it will break down first. Then break down होने के बाद क्या होगा, वो say for example simple sugars में convert हो रहा है. ठीक है, we are taking the example of carbohydrates. So it is breaking down to simple sugar. Now the simple sugar will be absorbed. Will be absorbed where? Will be absorbed in the blood. ठीक है, through the capillaries, जो कि ये intestine में थी, right? उसमें आपने blood में उसको absorb कर लिया. Now this blood contains certain sugar, right? And the blood contains whatever sugar is the blood sugar level of our body. इसी शुगर को जब ज्यादा होता है तो हम डायबिटीज बोल सकते हैं. ठीक है, मतलब हाई ब्लड शुगर, लो होता है तो लो ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया,
हाइपोग्लाइसीमिया, ये कंडीशंस आती हैं ना। ये शुगर जो होता है, वट एवर is required by our body, required in the sense if we are doing lots of physical exercises, lots of activities, right? So क्या होगा, ये sugar will burn, okay, this glucose will burn through glycolysis and those pathways and give you energy, right? But if your workout is very low, then what will happen to the sugar? Then that glucose which was there in the blood and which was not utilized by the blood cells mitochondria, right? हर एक blood cell में क्या है, mitochondria है, ठीक है? वो mitochondria में वो glucose utilize हो जाता है if you are doing certain exercises, whatever physical exercises and whatever your whole body, whatever your daily schedule is, आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत शुगर लगता है फॉर द इंटरनल एक्टिविटीज एंड बहुत ज्यादा शुगर लगता है फॉर द एक्सटर्नल एक्टिविटीज, ठीक है, मोस्टली. So now the excess sugar, excess glucose which is there, okay, what will happen to it? That excess glucose will go and deposit into the liver, ठीक है. So basically it is going through the blood, okay, and there in the liver you will study the whole pathway in the liver later in class level, that how this glucose is converted into glycogen and how again, when you are doing the fasting and fasting for maybe many days, so what happens, this glycogen which was preserved in the liver, that again comes out as a sugar, as glucose in the blood. When blood glucose level goes down, then automatically हमारे body में बहुत ऐसे responses होते हैं, feedback responses to the brain, that they will secrete those enzymes and activate those pathways which can convert this glycogen again back to the glucose, which will come to the blood and then will be utilized by mitochondria and to give you energy. Okay, understood this concept, everyone? Yes, miss. Is it clear to everyone this basic concept of what is happening in the body? I want a response from all the students. Miss, actually, I have a doubt. It's not related to the subject. Miss, you started from 5:15, so our class will end at 6:45. No. It will be ending by 6:30 only. Okay. So we have a maths class as usual. Yeah, as usual. Okay, miss. Okay. So this is clear to everyone. Anish? Anish, is it clear? Anushruta? Why everyone is so silent? I want replies from all of you. Yes, miss. Yeah. Okay. I want to know, Anushruta, Anish, am I Yes, audible to all of you? Okay. Yes, ma'am. Anish? Yes, ma'am. Okay. Nirmal? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, आप लोगों को डाउट है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू प्लीज लेट मी नो एंड आई रिपीट इट. ओके. So yes, which can be temporarily stored. When needed, the liver reconverts the glycogen into glucose and puts it back in the blood circulation. Just a second. लोहे वाला ना, और गैस सिलेंडर जो है ना, उस उधर वाला खोलिए नीचे. बस पता नहीं, इधर वाले में नीचे ही होगा. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, so that's what I told. Okay, again when it is required by the body, the glucose goes back. Okay, so the glucose is required in the body tissue as a source of energy in cellular respiration and also in the synthesis of certain compounds. Clear है? शुगर के साथ क्या हो रहा है बॉडी में, क्लियर है सबको? Yes, madam. Okay.
So the amino acids circulate in the now we are coming to the amino acids. What? So we have seen sugar के साथ क्या होता है, ठीक है? शुगर के साथ क्या हुआ, जितना भी ग्लूकोज ब्रेक मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज में, वो like it got absorbed by the blood capillaries of the large intestine, small intestine, okay, especially small intestine, and then it goes to different places से जो आ रहा है, that will go into two systems, right? Hepatic portal system and lymphatic system, ठीक है? इसके through it moves out. Then the glucose which is there, okay, in the blood will be utilized for the body activities, and whatever excess will be there will go into liver, and there it will deposit as a glycogen, ठीक है, as a storage material, ठीक है? And when the body glucose level becomes slow, that means when you take very low sugar intake, then what will happen? Then that glycogen which was stored in the liver, okay, will be converted back into the glucose and will be utilized by the body, okay. Now you know glucose is utilized as the energy compound. Now what happens to amino acid where it is required? So amino acids circulate in the body and they serve as building blocks of protein, ठीक है? ये हम already advanced class में देखे थे, right? How amino acids are the building blocks of proteins. So the amino acids cannot be stored. मैंने आपको ये भी बताया था, right? उस क्लास में कि जो amino acids हैं, there are many different types of amino acids. And among those amino acids, 20 main amino acids are there which are required for the protein formation, okay, which are required for the protein formation. So the amino acids cannot be stored, ठीक है? Important line, these amino acids cannot be stored. जैसे आपको क्या स्टोर किया जा सकता है? शुगर, क्योंकि शुगर जो होता है वो बॉडी का एनर्जी कंपाउंड है. जैसे हम खाना पीना जो होता है घर में स्टोर करके रखते हैं, राइट? किचन में या कुछ स्टोर रूम में, राइट? वो हम स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो हमारी बहुत अर्जेंसी होती है, ठीक है? अगर हमारे पास एक या 2 मील के लिए भी खाना नहीं है तो विल बी वेरी रेस्टलेस, राइट? वी नीड इट. सिमिलरली इसीलिए हम ग्लूकोज के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज को हम स्टोर करके रखते हैं, और ग्लूकोज हर एक टाइम यूटिलाइज हो रहा है बिकॉज हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, राइट? So it gets utilized continuously. बट अमाइनो एसिड्स के साथ क्या होता है, अमाइनो एसिड्स का अलग अलग पोर्शन में काम होता है. जैसे वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, और कुछ और प्रोसेस में भी रहते हैं. एक्स्ट्रा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी में सेव नहीं होते, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स रहने भी नहीं चाहिए. सो जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या, उनका क्या होता है, दोज आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन. सो लिवर में क्या करते हैं, इन अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है by the process of deamination, okay, where amination मतलब amine group को is taken out. Deamination means amine group is taken out. That means in which a nitrogen containing amino group is removed and converted into urea. It is converted into urea, ठीक है? Deamination में क्या होता है, amino acid is converted into urea for excretion and the remaining part forms glucose which can be utilized, ठीक है? So basically यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस था, इफ यू रिमेम्बर, जहाँ ग्लूकोज से हम एनर्जी लेते हैं, राइट? सो जो ग्लूकोज से जब हम एनर्जी लेते हैं तो बहुत बार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जब कम होते हैं हमारी बॉडी में तो हमारे पास कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा पाथवेज होते हैं, एडिशनल. मतलब ये तो मेन पाथवे है ही, इसी पाथवे में क्या होगा, कुछ और चीजें जुड़ेंगी. जैसे समटाइम्स फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके किसी ना किसी स्टेप पे दे विल कम टू द सेंट्रल पाथवे, जो आपका ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ऐसे जाता है. उस पाथवे में किसी न किसी पोर्शन में आके दे विल कनेक्ट. दिस आल्सो आई विल टीच यू इन क्लास 11. ओके, सो सिमिलरली जब अमाइनो एसिड्स कैन आल्सो सर्व एज एनर्जी मॉलिक्यूल, जब अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बॉडी में यूजुअली, तो वो जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू
यूरिया एंड ग्लूकोज, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, ठीक है. So urea is removed in the urine, right, as a excretory material, and the glucose which can be converted again back to glycogen in the liver, or if it is required by the body, it will be sent back in the blood as a glucose molecule. Clear what is happening with the amino acid to everyone? Is it clear, bachcho? Hello. Yes, miss. Miss, can I rejoin because the shared screen is not appearing? What? Can I rejoin because the shared screen is not appearing? Yeah, okay. Is it visible to others? Yes, madam, it is visible. Yes, miss. Okay, so what is happening with amino acids? Yes. Clear to everyone? Yes, miss. Okay. Then coming to the fatty acids, what is happening with fatty acids? Fatty acids and glycerol, they are absorbed by the gut and transported mainly through the intestinal villi and lymphatic system. Okay, so basically from the gut, they are transported through intestinal villi and lymphatic system. Okay, the thoracic duct of the lymphatic system empties into large veins carrying blood to the heart. Okay, some fats are used in synthesis of certain compounds in the body cells. The excess quantity is deposited chiefly below the skin as subcutaneous fat or around certain visceral organs in small quantity. Okay, so what is happening with the fat? Basically फैट में क्या होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल था, हमने स्ट्रक्चर देखा है, राइट. सो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये दोनों ही क्या करते हैं, दे आर अब्सॉर्ब इन द गट, ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू विलाई, एंटर इनटू मतलब इंटेस्टाइनल विलाई और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों से ये ट्रांसपोर्ट होता है. देन इट इज एक लिम्फेटिक सिस्टम की पर्टिकुलर डक्ट होती है, थोरासिक डक्ट, ठीक है, that empties into large veins, ठीक है, क्योंकि जो डक्ट वाला सिस्टम होता है ना, जितना लिम्फेटिक डक्ट होती है, वो लिम्फेटिक डक्ट फाइनली ब्लड में ब्लड के वेन में वापस से ब्लड को भेजती है. जैसे आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ होता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका नॉर्मल ब्लड होता है कैपिलरीज में, मतलब ब्लड वेन्स आर्टरीज में, सो वहां से वो ब्लड फिल्टर हो जाता है, मतलब आरबीसीज नहीं रहता, फिल्टर होके उसमें सारे जो पैथोजेंस हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीप आउट कर जाती हैं वेन्स के बाहर स्किन के थ्रू, और वो फिर लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट बन जाती है, वो लिम्फ में आ जाते हैं, ठीक है. तो उसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, बट डब्ल्यूबीसीज और बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिम्फ में फ्लो करती हैं, और उसमें सारे माइक्रोब्स पैथोजेंस जो होते हैं वो उसमें जाते हैं. फिर वो जाकर के लिम्फ नोड में हर जगह उनको जो ट्रीटमेंट देना है, उनको किल करना है, ये जो भी है, उसके बाद क्या करती है, अल्टीमेटली जो लिम्फ का बाकी पोर्शन है जो फिल्टर्ड आउट है, जिसमें से रिमूव हो गया है पैथोजन, वो वापस से आकर के किसी न किसी वेन को वापस से दे देता है बाकी सारा चीज, ठीक है. तो इस तरह से ये फ्लो करता है. दैट्स व्हाट इज रिटन हियर. द thoracic duct of the lymphatic system empties into large veins carrying blood to the heart, ठीक है. सो दिस इज द फ्लो ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है. सम फैट्स आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, ठीक है. एक्सेस फैट के साथ क्या होता है, वो स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है. So this is what happens with the fatty acids. Fatty acids are very less, they are required by the body in certain important mechanisms, certain important processes, but mostly whatever is extra will not be utilized in the as an energy source till you reduce your glucose intake, ठीक है. जब ग्लूकोज बहुत कम होता है तब बॉडी पहले फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करती है, एंड देन अमाइनो एसिड्स को भी यूटिलाइज करती है पैरेलली. सो दिस इज what happens with the fatty acids. क्लियर, एसिमिलेशन क्लियर हुआ तीनों कंपाउंड्स का.
glucose, amino acids, and fats. Is it clear to all of you? Narit, Shrijita, is it clear? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. So let's go to the next, that is liver. So a little bit we can read about liver. So liver is what? Liver is the largest gland of the body, weighing about 1500 grams. ठीक है? लिवर में क्या होता है? ये basically reddish होता है. Where is the location? Upper right side of the abdomen. ठीक है? Just below the diaphragm. Okay. You all know the location of liver? Everyone? Where it is located? सबको क्लियर है या किसी को डाउट भी है कि पता नहीं किधर था लिवर? Miss Madam. क्लियर है ना? Just for the understanding, I'm just showing you this thing. ठीक है? आप थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं. So this is the location of your liver. ठीक है? Just below the diaphragm, this is liver. Okay. So it is 1500 grams. It is reddish brown. You can see the picture also, right? And then upper right side of the abdomen below the diaphragm. Okay, that is liver. Then this is the extra functions of the liver other than production of bile. So कुछ functions तो हमने already देखे, ठीक है, discuss किए, जैसे कि क्या, first यहाँ पे लिखा है control of blood sugar levels, right? क्या करता है ये? ब्लड में शुगर ज्यादा होता है तो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. ब्लड में शुगर कम होता है तो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. करेक्ट? देन इट आल्सो कंट्रोल्स द अमाइनो एसिड लेवल, राइट? एक्सेस अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है, रिमूव करता है, डीएमिनेशन प्रोसेस, यूरिया एंड शुगर में कन्वर्ट कर देता है उसको, राइट? सो बेसिकली इट कंट्रोल्स द अमाइनो एसिड आल्सो. Then third is synthesis of fetal red blood cells. This is important. In the fetus, red blood cell is produced by liver. Okay. So हमारे अंदर कौन प्रोड्यूस करता है? बोन मैरो. We get RBCs from bone marrow. Okay, but fetus में RBCs कौन प्रोड्यूस करता है? Liver. ठीक है? This is important question, like from even exam point of view. Like understanding should be clear. Okay, then apart from that, it also produces what? Fibrinogen. ठीक है? Fibrinogen, prothrombin, ये हम पढ़ेंगे in circulatory system. Next year also you will read, and in 11th में आपको details में पढ़ेंगे. So basically fibrinogen, prothrombin, ये क्या होता है? Blood clotting में help करते हैं, right? ये factors होते हैं, clotting factors आप पढ़ेंगे. So then it also produces heparin, important एंटीकोआगुलेंट, कि आपको नीट एग्जाम तक अगर जो भी एस्पिरेंट्स है मेडिकल, सो यू रिमेंबर दिस टर्म, ये बहुत समय तक यूज होता है. हेपारिन जो है, दैट इज व्हाट? दैट्स अ एंटीकोआगुलेंट. देन इट आल्सो रेगुलेट्स व्हाट? ब्लड वॉल्यूम. हाउ इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम? लिवर जो होता है, इट कैन स्टोर एक्सेस वाटर. ठीक है? सो इट रेगुलेट्स द एक्सेस वाटर. It destroys dead blood cells also. ठीक है? हम क्या बोलते हैं इसको? Graveyard, right? Of RBCs. So मतलब not graveyard of RBCs, वो something different, but basically mostly जो आपका RBCs को destroy करना होता है वो liver में ये काम होता है. ठीक है? Then it stores these things, excess toxic material, sorry, excretes, मतलब toxic detoxification जो होता है वो लिवर में होता है. ठीक है? Cellular metabolism, it produces heat. Detoxification, I already told you. So these are the functions of liver. Okay.
तो अगर लिवर का जब हम टेस्ट करते हैं, लिवर सैंपल्स लेते हैं, तो हमको फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड सारी चीजें पता चलती हैं। स्पेशली अगर आप पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में यू सी दिस पर्टिकुलर लिवर से आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं कि क्या इंसान को लाइक इन अ डेथ केसेस लाइक वेदर इट वाज पॉइजनड और नॉट एंड ऑल दोस थिंग्स. So here we complete the absorption part also. Now there are experiments, different experiments on the digestion. Okay. So someone can read this. Okay. Who wants to read? Srijita, can you read? Yes, miss. Okay. Miss, the action of saliva. Yeah. The action of saliva on starch. Prepare a suspension of some starch by heating 1 gram of it in 100 ml of water in a beaker. Put some of this suspension in 2 test tubes. Test a sample from one of the test tubes for starch by iodine solution and another sample for the other test tube for sugar. Take a little starch suspension in a third test tube and add it to an equal amount of saliva which you may collect earlier by chewing some wax. Hold this test tube in your hand for 15 minutes to keep it warm, or you can put the test tube in a beaker containing water at about 38 degrees Celsius. Next, perform sugar and starch test on the samples taken from it. It will no longer give a positive starch test but will show presence of sugar. Okay. So you understood the experiment, action of saliva on starch, right? So basically क्या कर रहा है saliva? Saliva starch को degrade कर रहा है, right? So that's why you are seeing that one, हमने क्या किया इसमें, कुछ स्टार्च को लिया, उसको हीट किया 100 ml वाटर में, ठीक है, फिर उनको 2 टेस्ट ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. देन in one test tube what you do, you added a iodine solution or and another sample from the other test tube for sugar, right? So iodine solution किस लिए होता है? For starch test, ठीक है. Now you took a little starch suspension in a third test tube. उसमें क्या किया? Equal amount of saliva डाला, ठीक है. Proper amount of saliva is also required. So then what will happen? Saliva, we know that saliva has salivary amylase, so it breaks the starch, ठीक है. When starch will be broken, then what will happen? Starch का एक molecular structure होता है जिसकी वजह से वो iodine test देता है, ठीक है. So when that structure is broken down, then what happens? Then it won't show the iodine test, ठीक है. So the saliva will convert, right? Then what will happen after 15 minutes when you will again test the both test? So what you will find? You will find that it will not give the iodine test because उसका जो helical structure होता है जहाँ iodine जाके fix हो जाता है एक जगह पे, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है. लेकिन जब आप स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा? वो ग्लूकोज के मोनोमर्स ही बनेंगे, राइट? तो वो ग्लूकोज मोनोमर्स विल स्टिल गिव द टेस्ट फॉर ग्लूकोज, बट स्टार्च का जो आयोडीन टेस्ट होगा दैट वोंट बी सीन. क्लियर है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Hello. Yes, miss, it's clear. Okay. Am I clearly audible to all of you? सबको सुनाई दे रही है आवाज ठीक से? Yes, miss. Okay. Then the next test. This test is for what? The action of pepsin on egg white. Okay, so someone can read. Here, can you read? Hello, here. Yes, ma'am. Yeah, can you read the second experiment? Yes, ma'am. The action of pepsin on egg white, a protein. Stir white of an egg in about 500 ml of water. Boil the mixture and filter it through glass wool. The filtrate will be a cloudy liquid suspension.
Take 4 test tubes and make them A, B, C, and D. Take a small quantity, about 3 ml, of the suspension in each test tube. Now add a few drops of 1% solution of pepsin and hydrochloric acid as follow. Test tube A, only pepsin. Test tube B, only HCI. Ma'am, HCI. HCl है वो actually. HCl. Test tube C, pepsin plus HCl. Test tube D, acid plus boiled pepsin solution. Place all the test tubes in a beaker of water about 35%, 35 Celsius for nearly 10 minutes. Only the test tube C will show the cloudy suspension change to a clear solution. The experiment proves 3 things. First, pepsin can digest protein only when it is acidic. Second, alone has no effect on the protein. Third, boiled pepsin fails to digest protein. In other words, the enzymes pepsin is destroyed by heat. Okay. So this is clear to every experiment is clear to everyone. Ashmita, Yes, miss. is it clear? Yes, miss. Can you tell me why pepsin can digest protein only when it is acidic? Miss, to act upon the food and break down the to break down the molecular structure of the food. So why? Why only when it is acidic it can do? Why it cannot do when it is non-acidic? Adrita, can you tell? Ma'am, can you repeat the question once more? Here, whatever is written, pepsin can digest protein only when it is acidic. Why? Anyone else who wants to answer? Miss, can I? Yes, Pawan. Miss, actually, at first, pepsin is present as in its inactive form known as pepsinogen, and the acidic nature the HCl activates it, and it gets converted into pepsin, and it acts on the protein Very and good. forms it. Very good. Okay, so this is the right answer for this question. Okay, because this is already written ki when it is acidic it can digest. But why so? Because I have already told you ki it is secreted as an inactive enzyme as pepsinogen, right? And then in presence of HCl it converts into active form which is known as pepsin, and then only it can degrade the protein. Okay, it can break down the protein. राइट सो बेसिकली ये जो 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं इसमें क्या हमने देखा सिर्फ पेप्सिन जब डाला है तो ये एक्टिव नहीं होगा क्योंकि क्या होगा इट विल बी इनएक्टिव फॉर्म ठीक है बट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन HCl then only it will become active, right? And then only it will act on the protein. Rest all other conditions will be inactive, मतलब will not work on proteins. ठीक Miss, है and boiled pepsin solution does not work. Miss, the enzymes get destroyed at very high temperature. not very high temperature. Basically जब जो enzymes होते Miss, they हैं get denatured. हाँ it will get denatured. Basically proteins will get denatured at high temperature. Okay, may not be till boiling even if it is low. And not only that, if I tell ki if I although this thing is not taught to you, but if I tell optimum temperature of pepsin to work is say 37 degrees centigrade, and instead of boiled pepsin solution I did this pepsin plus HCl, but the temperature I gave of 60 degrees or say 55 degrees, what will happen? Again, it won't work. Why?
because the optimum temperature which is required for this enzyme to work is not achieved, so it won't work, right? That is the nature of enzymes. Clear to everyone? Yes, miss. Okay, now the third experiment, effect of acidity and alkalinity on an enzyme reaction. So someone can read. Who wants to read? Swapnabit, you can read. Hello. Yes, sir. Can you hear Swapnabit? No? Miss, I can hear, but my network connection is fluctuating. I really cannot see which part you are telling to Okay. read. Means I am Yashwant, can you see? Yashwant, can you see? Can you see the screen? Yes, please. Can you read this paragraph? Which one? Third point, effect of acidity and alkalinity. Okay, miss. Effect of acidity and alkalinity on a enzyme reaction. In the same experiment as above, take a test tube E, in which take the egg white suspension and add it similar quantity of pepsin plus a few drops of mild sodium bicarbonate solution to make it alkaline and keep it at 35 degrees Celsius. No change will be noticed in the cloudiness of the suspension. This it proves that the pepsin does not act in alkaline medium. Okay. So this is another experiment to show that enzyme, especially pepsin, for example, acts in acidic conditions, so it won't work in alkaline condition. If you keep trypsin in place of pepsin, then what will happen? It will work in alkaline condition, but it will not work in acidic condition. Is it clear? So this is very simple thing. Now, only last few paragraphs are remain, so we'll just go little faster. Okay, so this is practical work. Glucose test. ठीक है, ग्लूकोज टेस्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं फेलिंग टेस्ट. ठीक है, दिस इज फेलिंग टेस्ट. सो एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है, इसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं. ठीक है, देन टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं? यू हीट इट. ठीक है, until it bubbles. ठीक है, and then what will happen? मतलब ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा? इसका पहले सोल्यूशन कलर होता है ब्लूइश ग्रीन. If glucose is there, you heat with filling solution, it will convert into deep brick red color. ठीक है, blue green color will change to a brick red color. ठीक है, with the appearance of a precipitate. ठीक है, ये क्या होता है? ये टेस्ट होता है ग्लूकोज के लिए. ठीक है, सो जब हम डायबिटीज के लिए टेस्ट करते हैं मतलब पेशेंट्स का, सो वी डू दिस टेस्ट ओनली. देन सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो होता है ये टेस्ट नहीं देता है. ठीक है, क्यों नहीं देता है वो हम बताएंगे बाद में कभी. यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया, बस याद रखो. सुक्रोज जो होता है, it does not give the above test until after it has been boiled with dilute hydrochloric acid and neutralized. क्योंकि सुक्रोज जो होता है इसको हम कहते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है. नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये टेस्ट नहीं देता है, तो उसको जब तक ब्रेक डाउन करके फ्री एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं आते हैं तब तक ये टेस्ट नहीं देता है. ठीक है, देन स्टार्च के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्च के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो स्टार्च पाउडर लिया, उसके बाद उसको वाटर में बॉईल किया स्टार्च को. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उस सॉल्यूशन को ठंडा करने के बाद उसमें आयोडीन डालेंगे. फिर क्या होगा? आयोडीन क्या करेगा? एक ब्लूइश ब्लैक कलर शो करेगा. तो अगर ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है, दैट मीन्स इट कंटेन्स स्टार्च. ठीक है, सो ये चीज आप कभी भी कर सकते हो. अगर आपके पास आयोडीन सोल्यूशन है तो यू कैन डू इट ऑन पोटैटो. वो बॉईल करो, उसके पानी को निकाल करके उसमें अगर आयोडीन डालोगे तो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा. दैट इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर द स्टार्च. देन प्रोटीन के लिए अपन क्या करते हैं?
सो प्रोटीन के लिए अगेन प्रोटीन का कोई भी सैंपल लो, जैसे बॉइल्ड एग है, एग वाइट स्पेशली, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड डालते हैं। ये नाइट्रिक एसिड इज वेरी डेंजरस, सो वेरी केयरफुली, मतलब ये लैब में ही किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, ठीक है, एंड देन rinse off the acid with water, ठीक है, and then we add ammonium hydroxide, ठीक है, then there is a change in the color, ठीक है, what is the change, white to yellow and then slowly to orange, ठीक है, white to yellow होता है, उसके बाद जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो ऑरेंज हो जाएगा। so this is the test for protein। प्रोटीन के लिए और भी टेस्ट होते हैं, this is one of it। then fats and oils, fats के लिए क्या टेस्ट करते हैं हम, यूजुअली आप मतलब जिसमें भी फैट है, ग्राउंड नट, वॉलनट, वॉट, उसको रब करो ऑन द पीस ऑफ अ प्लेन पेपर, ठीक है, स्पॉट रब्ड जो पोर्शन होगा पेपर का वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ठीक है, सो दैट शोज द फैट ऑयल्स का प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके, वाटर के लिए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको मॉइस्चर के लिए भी, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे होंगे, राइट, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड का एक टेस्ट ट्यूब में कुछ रख देते हैं, राइट। सो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है ये ब्लू होता है जब, ठीक है, ड्राई होता है, और अगर इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो ये पिंक हो जाता है। तो किसी भी पोर्शन में या किसी भी चीज में अगर आपको देखना है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट है कितना है, ठीक है, कितना मतलब क्वांटिफाई तो नहीं, बट फिर भी आप देख सकते हो, अगर बहुत हल्का पिंक होता है तो बहुत कम मॉइस्चर है, ज्यादा पिंक हो जाता है तो ज्यादा मॉइस्चर है, ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। तो कोबाल्ट क्लोराइड इज वन ऑफ द इंडिकेटर। मिनरल्स के लिए जो होता है बहुत सारे चीजें होती हैं, ठीक है, मिनरल्स को आप ऐसे नहीं कर सकते, कौन सा मिनरल है उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ऐश कंटेंट, तो हम एक ऐश से एक पूरा सोल्यूशन होता है, एक पूरा हम निकालते हैं, उस ऐश में कितना मिनरल है या नहीं है, ठीक है, वो हमको देखना होता है। So this is it, I think we have ended this chapter here, ठीक है, so please go through the chapter, solve the questions given back, end of the chapter, and go through the chapter once again, and then if you have doubts we can share in the next class.